action from the golf course. We've had so far four medals, four gold medals that have been decided from this particular course. Today, again, we will have two gold medals at stake. This is the start list: Ashish, Sandeep, Santosh, Arjun, Param, Kamakta, Mahadev, Tariq Hussain. Interesting is going to be whether he can sustain himself across 15 kilometers. Tupstan Tizwang, again of the army, the 31-year-old, giving company to Tariq Hussain. Sunny Singh, the 26-year-old, once again from the army, carrying the number 48. Stands in Lundu. I wouldn't be surprised if he's from Ladakh, Leh Ladakh. Stands in and Lundu, both names which are very common in that part of the country. Beautiful white carpet inviting these skiers. Visibility a little low today, but somehow not the same crushing snow and wind conditions that you had to deal with yesterday. Now you'll have that flow of skiers constantly battling against themselves, battling these conditions, battling the low visibility as well. Well, that is the challenge of Nordic skiing eventually. So you're not at the foothill of a mountain, which is where the name Alpine skiing comes from, because you're looking at high descents and high speedy action. Tupstan and Shubham of the army have had some blistering times in lap 2. 6 minutes 47 seconds. That's a really speedy lap. And I think in these conditions, wherein you know that probably at any moment of time you might have some snowfall coming in as well, you want to make the best of the conditions. So lap 1, lap 2 will be crucial because the wind hasn't really picked up and the snow isn't falling down. You want to make up for the time as much as possible. Beautiful visual of the technique that it takes to build some speed. Bent knees, aligned calves, tucking in those skis, because your arms need that rest as well. They're working really hard. Tough fight here. Don't worry about the sequencing. It doesn't really matter because the start points of each of these skiers would be different. But just the fact that you can see a cluster of these skiers so close to each other, it means that these skiers are really pushing each other hard, reducing the gap between them. Just trying to use that momentum as much as possible from the downhill angle. Take that into the turn. And how much of that momentum can you carry forward? That's what matters. And we saw a great example there of the skier coming from behind, carrying that momentum. And we have a change. Our statisticians keeping a close eye on proceedings, letting us know that Stanzik Lundup has taken the title of the best lap on lap 3. So Tupstan now moves to the second position. Sunny Singh in third stands in with the fastest lap 3. 6 minutes and 45 seconds. And we have a lot of participation from the forces, CRPF, Indian Army, ITBP. And you can see a good number of them in their fatigues, their friends and mates on the sidelines, trying to take pictures, trying to cheer them on. Beautiful pictures here. Gulmarg, of course, called by many as a paradise city, with its rich history, with its rich tradition. A favorite for the locals when it comes to tourism. Lap 5 timings, Tupstan
with the fastest lap, Santosh Moktan. Huge gap there between the top two times so far. And I'm sure it'll be interesting to see what Sunny Singh does. Last two laps, he's been able to come up with the fastest laps. And if Sunny can give us a strong lap here, let's not forget this is the penultimate lap, 6 laps to decide this gold medal. And we are almost 5 segments in. So Tupstan with that 707 has been consistent through and through. And Sunny Singh beats that time, but look at the differential. It's a mere 1 second gap. So overall calculations, if you've been writing down the times for every lap at home, you will be keeping a close eye on this. We will, of course, be relying on the technical officials to give us the best times and figure out what we need to do there further. Santosh Muktan slowly drifting down as Tariq Hussain comes in at 3. Approaching that start-stop finish. Lap timings for lap 5. Sunny Singh again setting the pace. Tupstan close behind him, just a second separating him. Tariq Hussain giving them a little bit of a cushion. I think Tariq beginning to feel the fatigue. There has been a drop in terms of lap timings from each of these skiers. But right now, Sunny Singh bringing the fantastic consistency with his performances right from lap 3 onwards. 2, 3, 4, 5. It's been a Sunny Singh and Tupstan competition. We're approaching the last lap now. This is when you get to know what champions are made of. This is when the skiers begin to put their 100%. Doesn't really matter what's happened in the previous laps, how much you have in the tank. You don't need to conserve energy anymore. So this is when you begin to just use the heart, forget what the muscles are telling you. What a beautiful view of the conditions of the white carpet that blanket all around this city right now. And in the midst of that speck of a committed sports person in quest for victory, for glory, turning this beautiful nature lover's paradise of Gulmarg with its lush green meadows, these snowy carpets, the serene lakes, the region, of course, being home to some of the most beautiful and rare species of flora and fauna. And during the summer months, these icy plains become meadows and are adorned with flowers, including daisies, buttercups, and forget-me-nots. Right now, these skiers are trying to be those forget-me-nots, trying to write their names in history, trying to get some precious metal etched in front of their names. In these winter months, while we are here, Gulmarg, of course, transforms into this beautiful winter wonderland. The snow-covered slopes, these frozen lakes where you can ice skate, and is a popular destination for skiing, snowboarding, and other winter sports. Combine this with the beautiful cable car setup, which is called the gondola rides here, and that takes you to phase 1, phase 2 of the ski slopes. And if you're here in these parts, do definitely take the effort to take the gondola ride up. And approaching the finish line right now with some energy. Those last few seconds can make a difference. Just gets past. That final burst of energy. You don't want to take anything back home. Rajat Sharma there of ITBP giving it his all. And after 6 laps in these conditions, the sun finally begins to come out. It's almost as if it was waiting for the skiers to get done with their course and then popping out from behind the clouds. Among the last few skiers making their way into the start, stop, finish straight. And right now we've not had much change. On to that top 3 gold medal position still well and truly with Sunny Singh. Indian Armies stands in Lundup in the silver position and Tupstan in the bronze position.
We have, of course, all three of these skiers belonging to Indian Army. Those in the crowd who've been close to the start stop finish line have had the privilege of being under the covers to watch some of these skiers go by. But right throughout the course, we had a lot of these crowd members in different positions trying to cheer on their athletes. So we have the final list here available to us. We'll take a look at the top 8. Sunny Singh finishing in the first position, Stanzik Lundup in the second, Tupstan in the third. So it's an army sweep through and through, taking the gold, silver, and bronze. Of course, you can take a look at the timings of the remaining skiers. Raj, Manjeet, Ramiz Mohammed, and Farman Ali. The army dominating the top 8 with all the skiers coming from their contingent. And we're waiting for flag off right now for the start of the Nordic skiing women's 1.4 kilometer sprint. So the first one off the blocks is going to be Tarang, chest number 9, representing ITPP. And of course the international just back from Norway, Bhavani Tekara Manjula from Karnataka. Selma Norsingh. Selma, of course, in the medal contention yesterday, and she will be looking forward to get yet another medal at the Khelo India Winter Games. And we've reached a stage wherein in about 5 minutes you will have the first set of skiers who've already completed this race. And that's Kusum Rana, who grabbed her gold medal yesterday, towards the finish point, being applauded by her fellow skiers. That's a good ending. That's a good ending. But she's absolutely exhausted. Bhavani Tekana Manjula of Karnataka. Be interesting to see the time that she has clocked. Pooja Bhatt now completing the race. Kiran of ITBP. Selma Soreng of ITBP. She'll be another name for us to watch out for. Look out for Pooja Bhatt, her timing, Selma Soreng's timing. Of course, Bhavana has just wrapped up, so we'll be waiting for the technical team to send us those times. Once we have that, we will have a good idea. Of course, also look out for Kusum Rana of ITBP. That, I believe, is going to be the competition. Bhavani, Kusum, to some extent, even Anjana Devi, Pooja Bhatt as well. Well, this is going to be a close race. Eventually, I think there is a group of about 6 of them, and of that 6, 3 will be on the podium, and 3 will probably not make it. And that's completing the race there. Hiral, committed and consistent. Sapna, making her way uphill. Pooja Bhatt, watch out for this time as well. At the 5-second mark now. Once you can see that finish line, it's just a countdown, 5 seconds. That's what you tell yourself as you try to put in the last bits of energy into those arms, pulling you through. So we're done with probably the medal contenders, and now we'll have those who will be bringing up the numbers. As far as medal contention goes, Kusum Rana probably the name that we can still watch out for. Number 7. Watch out for that number on your screens. Renu Danu. So that's what the time looks like. A great race by Bhavani.
So Bhavani right now in the top position, gold medal position. Selma Soreng in silver and Anjana Devi in bronze. Let's wait and watch. There's a time that I'm waiting for. It's for Kusum Rana, number 7. That's she's approaching the finish line. This is going to be a crucial finish. Let's see the timing that she records because that's the name that can disrupt that top 3 position. She's absolutely exhausted on the left hand side of your screen. Confirmation, and that's what I was waiting for because I knew that Kusum Rana would be a strong contender. But even I didn't expect it to be a 3-second affair. Kusum Rana takes the gold medal with a time of 6 minutes and 40 seconds. Bhavani take it a silver with 6 minutes and 43 seconds. Selma Soreng takes the bronze, 6 minutes and 54 seconds. What a fantastic race we've had. What a fantastic day of action here in Nordic skiing. और अब वुमेन अल्पाइन सलालोम ड्रोन कैमरे से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा परिस्थितियां ठीक हुई हैं और ये एक एथलीट आपके समक्ष स्टार्ट किया जिन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत स्पीड के साथ डाउनफॉल में आते हुए, नीचे की तरफ आते हुए पहाड़ियों में, कंगडूरी गुलमर्ग की पहाड़ी, ये एक एंगल बनाकर आपके लिए ट्रैक तैयार किया गया है। बहुत ही बढ़िया कंट्रोल के साथ धीरे धीरे फिनिश पॉइंट की तरफ पहुंचते हुए आधा रास्ते से ज्यादा कवर कर लिया है। बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हैं, बैलेंस आप देख सकते हैं और कैसे फिनिश पॉइंट की तरफ पहुंच रही हैं ये आप देख सकते हैं। और ये फिनिश पॉइंट पर एक कर्व और ये लास्ट स्ट्रेच जिसके साथ कंप्लीट किया, फिनिश किया इवेंट को बहुत ही अच्छी तरह से। कुल मिला के 25 एथलीट्स हैं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक और एथलीट, और ये भी स्टार्टिंग इनकी भी बहुत बढ़िया है, अच्छी स्पीड के साथ बैलेंस बना के रखा है। नी बैंड पोजीशन जो होना चाहिए आपकी, जिसके कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और आप देखें किस तरह से कोर्स पर अपने अनुभव के साथ, अपनी स्पीड के साथ, अपने बैलेंस के साथ इस कोर्स को कंप्लीट कर रही हैं, अपने इवेंट को कंप्लीट कर रही हैं। फिनिश पॉइंट पर जैसे जैसे प्लेयर पहुंचते हैं, एथलीट पहुंचते हैं, उनकी स्पीड में इजाफा होता है और चाहते हैं कि लास्ट स्ट्रेच के साथ कुछ सेकंड्स को और कंप्लीट कर सकें। अच्छी तरह से कंप्लीट किया अपने इवेंट को। लेकिन ये खेल ही ऐसा है जो चुनौती को आमंत्रित करता है और आप जब चुनौती साधते हैं तभी आप जीवन में कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं अन्य व्यक्तियों से। अगली स्कीयर बहुत अच्छी स्पीड के साथ, कंट्रोल भी बहुत अच्छा बना के रखा है उन्होंने। ट्रैक पर आप देख सकते हैं, इस कोर्स पर आप देख सकते हैं किस तरह से घुमावदार कर्व बनाकर ट्रैक को निर्मित किया गया है और उस ट्रैक पर स्पीड के साथ, कंट्रोल के साथ इस वुमेन अल्पाइन सलालोम इवेंट को फिनिश कर रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं कि किस स्पीड के साथ उन्होंने इस इवेंट को शुरू किया था और उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए अब फिनिश पॉइंट की तरफ बढ़ती हुई। थोड़ा सा फासला और है, देखना है कितनी स्पीड को वे मेंटेन कर पाती हैं। सबसे आवश्यक है आपको स्पीड को मेंटेन करना। बैलेंस आपका बहुत अच्छा है और टाइम देखना पड़ेगा, ऑफिशियल जो टाइम आएगा वो क्या आता है। लास्ट स्ट्रेच पूरा पावर लगा दिया, जितनी ताकत थी पूरी शक्ति के साथ इस फिनिश पॉइंट को क्लियर किया। इंतजार रहेगा ऑफिशियल रिजल्ट का कि क्या ऑफिशियल रिजल्ट आता है, कितने समय में उन्होंने इस कोर्स में अपने इवेंट को पूरा किया है। और नए एथलीट कुल 25 प्लेयर्स हैं जैसा हम आपको बता चुके हैं और कुछ ही बाकी बचे हैं अपने इस वुमेन अल्पाइन सलालोम इवेंट को संपन्न करने में। आज जो 2 गोल्ड मेडल का फैसला हुआ, एक गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश को मिला। प्रीति ठाकुर ने वो स्नोबोर्ड सलालोम में दिलाया था हिमाचल प्रदेश को और जो दूसरा गोल्ड मेडल था वो इसकी माउंटेनियरिंग का रिले टीम का इवेंट था जो जीता है आर्मी की टीम ने। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत, बैलेंस सही नहीं रहा, कुछ सेकंड गंवाए, लेकिन वापस कोर्स पर अलग अलग जगह पर कैमरे लगे हैं। ये एक और ड्रोन कैमरा जहां से फ्रंटल शॉट आपको मिल रहा है। पूरे कोर्स के ट्रैक पर हमारे कैमरा पर्सन्स अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं। थोड़ा सा समय गंवाया, थोड़ा दिक्कत आई थी शुरुआत में ही, लेकिन उसके बाद
अपने इवेंट को फिनिश करने में सफल रही, जहां पर इस समय ये आयोजन चल रहे हैं। और अब एक और नई स्कीयर अपने इवेंट को शुरू किया। अच्छा कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल जो गेट्स बनाए गए हैं, जो पोल्स बनाए गए हैं, उनके बगल से निकलती हुई अपनी गति को मेंटेन किया। बहुत अच्छी टेक्निक का ये प्रदर्शन कर रही हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन आनंद खेल का पूरा उठा रही हैं। स्कीइंग करना, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1960 से यहाँ पर स्कीइंग की एक्टिविटी शुरू हुई थी। एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था 1968 में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, जो बदस्तूर अभी भी जारी है, लेकिन सुविधाओं का बहुत ज़्यादा बढ़ावा। और ये एक और एथलीट जिन्होंने अपने इवेंट को फिनिश किया फिनिशिंग पॉइंट पर जाकर। और कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, ऊपर की पहाड़ी से एक और नए एथलीट बहुत कंट्रोल के साथ, बिल्कुल भी कोई उन्होंने प्रेशर देने की कोशिश नहीं की, अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। केवल अपनी स्पीड है उसे मेंटेन कर रही है कि कोई बॉडी बैलेंस उनका ना बिगड़ जाए, और यही होना चाहिए। और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको तब प्राप्त होता है जब वर्षों की आप तपस्या करते हैं, और उस तपस्या के सहारे अपने कोर्स में अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। फिनिश पॉइंट नजदीक, और वो चश्मे उनको उनकी सेफ्टी के लिए भी होते हैं कि जिस स्पीड के साथ पे चलते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। और ये फिनिश पॉइंट एक और स्कीयर ने इस अल्पाइन स्कीइंग सलालोम के इवेंट को पूरा किया। और ये देखें आप, ड्रोन कैमरे के माध्यम से लिया गया शॉट, जिसमें आपको साफ नजर आ रही है एथलीट किस कंट्रोल के साथ वे नीचे की तरफ आ रही हैं बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी से। और ये नियंत्रण और अपने ऊपर भरोसा, जिसे कहते हैं कि आपने जो प्रैक्टिस की है वो आप फील्ड पर दिखाते हैं। और एक और एंगल से आप शॉट देख सकते हैं, फ्रंटल शॉट, और फिनिश पॉइंट को बहुत ही कंट्रोल के साथ पूरा किया। कुल मिला के 25 एथलीट्स, एक और एथलीट थोड़ा सा लंबे कद के, ये सपोर्टिंग स्टाफ के मेंबर हैं जो ट्रैक को देख रहे थे कि कहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो एथलीट्स के सपोर्ट में पूरे ट्रैक पर रहते हैं। और ये 25 में से एक और एथलीट, शुरुआत बहुत अच्छी, नियंत्रण बहुत बढ़िया, और ये नियंत्रण कितना आगे तक जा पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, कल सुबह से ही गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है। कल तो बहुत तेज बर्फबारी हुई थी, आज हल्की बर्फबारी है, लेकिन धुंध बहुत है, कोहरा बहुत है। और ये बैलेंस लूज किया, लेकिन वापस कंट्रोल में आ गई हैं। और यही ऐसे समय रहते हैं जहां इन एथलीट्स को असली परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जहां पर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है। और कंपटीशन है, बड़े लेवल का कंपटीशन, नेशनल लेवल के सारे बड़े एथलीट्स इस 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा इवेंट है, जैसा इसके पहले जो मेडल विनर्स थे उनसे बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि कितना बड़ा इवेंट है ये उनके लिए, और कितनी तैयारियों के साथ वे आए हैं। जिगजैग ट्रैक पर कंट्रोल, और लास्ट कुछ मीटर्स और बचे हैं जहां से अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगी। जी हाँ, स्पीड को इंक्रीज करना शुरू कर दिया है कि अपने समय को और अच्छा कर सकें और बेहतर कर सकें अपने समय को। फिनिश पॉइंट जहां पर ऑफिशियल लड़े हैं और टाइमिंग्स नोट होगी, ये लास्ट स्ट्रेच, और इसके साथ फिनिश पॉइंट को क्रॉस किया।